Okay. ओके, मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ सर, हाँ सर। गुड। तो अपने कैमरा ऑन करो जल्दी से। तो हमने कल प्रोजेक्शन थ्योरम किया था, आज जरा उससे आगे बढ़ेंगे हम। कैमरा ऑन सभी। तुम अटेंडेंस का ध्यान रख रहे हो ना? अच्छा। हाँ सर, हाँ सर। ओके, सभी कैमरा ऑन करो ना, ये भी अटेंडेंस ही है जो तुम्हारा कैमरा ऑन देख रहे हैं। अच्छा, मुझे तुम्हारे सारे रोल नंबर्स चाहिए थे। ठीक है सर, मतलब मैं ना आपको वो जितने लिस्ट क्लास में देता हूँ। मुझे वो एग्जाम का करना था, वो जो हमारे वो मार्क्स है ना पहले जी से सर। आए के, लेकिन मुझे तुम्हारे पास पूरे स्टूडेंट्स की लिस्ट नहीं है जो ना है इस टाइम सर, क्लास में। वो लिस्ट बना के सर मैं आपको सेंड कर देता अब हूँ। तो मुझे सेंड कर देना। ओके, कैमरा सभी ऑन करो। ओके, लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन। अपना व्हाइट बोर्ड हम शेयर करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने किया था फॉर अ हिल्बर्ट स्पेस, for a Hilbert space H, you can always write H as direct sum of M plus M perp, where M is a closed subspace H. And needless to say, it's very useful. कि हम जब किसी स्पेस को ब्रेक करते हैं into smaller pieces in a meaningful way, which preserves, मतलब meaningful means which preserves the structure. What is M? M is itself a Hilbert space, right? So अगर हम उसी के जैसे छोटे हिस्सों में उसको बांट सकते हैं, तो any problem about H can be in that manner, made easier by looking at the smaller pieces of H. Okay. So let's talk about another thing. So that's orthonormal space. Now orthonormal subsets, not space. Orthonormal sets. An orthonormal set in a Hilbert space H, in a Hilbert space H, is a non-empty subset of H, is a non-empty subset of H, which consists of mutually orthogonal unit vectors. Mutually orthogonal unit vectors. That is, it is a non-empty subset EI of H such that EI EJ is equal to 0 if I is not equal to J, it's equal to 1 if I is equal to J.
यानी सभी जो EIs है उनका नॉर्म 1 है और वो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है, एक दूसरे के साथ वो ऑर्थोगोनल। सो इस तरह से भी कह सकते हैं, और कभी कभी इसको इसी चीज को हम लिखते हैं EIJ इज इक्वल टू डेल्टा IJ। मतलब यही होता है कि अगर INJ सेम है तो ये 1 है, अदरवाइज 0। and we call this chronicle delta, this notation delta। anyway, तो ये हमने किया। now examples could be many। जैसे अगर मैं लेता हूँ Rn under Euclidean norm, Euclidean norm is generated by the inner product, the dot product. Then of course if I take this set of vectors 1 0 0 so on and up to 1 0, then 0 1 0 0, then 0, इसी तरह से जाते जाते 0 0 and last पर 1। ठीक है, तो इस तरह के अगर सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, नेचुरली इनका जो नॉर्म है 1 है और ये म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, राइट। इनफैक्ट और भी हो सकते हैं, ये तो हमने बदला क्या बोलते हैं, जल्दी में हमने कर दिया। मतलब जो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स है, द नेचुरल बेसिस ऑफ आर। सो एक तो ये है, और ऑफ कोर्स अगर मैं लूंगा L2 अंडर इट्स ओन नॉर्म, उसमें भी ये जो सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स है E1 E2 so on and so forth, so this is where E1 is equal to, या En is equal to 0 0 up to 0 1 0। It's a sequence which has got only one non-zero entry, that is 1 at the nth place. So this is also an orthonormal set, is an orthonormal set in L2. This is in Rn, and of course there could be another one, जैसे हमने अभी तक किया नहीं, the L2 मैंने इसको अवॉइड करने की कोशिश की थी। यूजुअली फंक्शनल एनालिसिस सेकंड में इसको हम ज्यादा डील करते हैं। Nevertheless, L2, let me write it down, L2 mu, if you have a measure space X, right? X is a measure space means it has a sigma algebra of sets and a mu, that's a measure defined on that sigma algebra. Then we can define L2 mu to be the space of all F scalar valued maps from X to K such that F is measurable, and we write integral F square, of course this is Lebesgue integral, b mu is less than infinity. ये जो L2 है, it is, of course you can define this for p integrable functions or any p, यानी ऐसी सभी functions such that जो कि measurable है and integral x f raised power p t mu is less than infinity। इसको हम बोलते हैं pth power integrable functions, or they are all normal linear functions, मतलब normal linear spaces। So we define the norm of f under pth norm जो इसका होगा, of course p has to be greater than or equal to 1। So pth norm जो होगा वो होगा as usual to be integral x, what you expect is वही होगा, whole raised power 1 by p। So इसको हम शुरुआत में थोड़ा टच नहीं करते, and of course अगर मैं L2 लूं in particular, L2 is a Hilbert space, L2 mu is a Hilbert space। मैं फिर से लिखता हूँ, it is a function from this measure x to the scalar field k such that f is a measurable function and mod of f square is integrable, और इसको हम ऐसे लिखते हैं।
एंड इसका जो नॉर्म है, जैसा कि इससे पहले हमने पी से नॉर्म किया, वही यहाँ पर भी है। ओके, लेकिन इसमें एक इनर प्रोडक्ट भी डिफाइन हो सकता है। इसका जो इनर प्रोडक्ट है वो नीडलेस टू से इज ऑफ दिस फॉर्म, f of x g of x bar d mu. So this is an inner product on big L2, and of course you can see that ff का जो positive square root है, that is precisely norm f2. अब इसमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊं क्यों। क्योंकि जिस तरह से हमने वो डिफाइन किया था ना, समेशन x I y I bar I runs from 1 to infinity, every integral is ultimately a sum of the values of the function. So it is basically integral hota hai limit of some sum. So this can be also thought of as a sum of this type. Only thing is, here we have discrete values. You've got x1, x2, x3, they're countably many. लेकिन यहाँ x जो है वो इस x में belong करेगा, which need not be countable. They just take any values over, it runs over all the values of x. जो fx gx है, यहाँ xi yi are countable. So it is indeed not much different than the small L2 या small LP spaces, और इनमें कुछ खास फर्क नहीं. In fact, we will show that this small L2 is isometrically isomorphic. Any Hilbert space with a countable basis is isometrically isomorphic. जो हम करेंगे आगे उसको रहने देते हैं. So ये जो space है, अगर मैं लेता हूँ अब L2, हम लेते हैं इसको 0 1, उसमें कुछ नहीं है, यानी x की जगह है Lebesgue integrable functions on 0 1. Then you can say f is measurable, and of course integral from 0 1 the Lebesgue integrable f square d mu is less than infinity. इस पे obviously एक inner product होगा. इस पे inner product क्या होगा? fg is equal to interval 0 1 of course f of x g of x का bar d mu, right? लेकिन अगर मैं इस पे एक sequence of functions दूं तुम्हें, that is enx, बजाय 0 1 के, just to make it, no, I could have taken any set, तो बजाय इसके मैं लूंगा, let me write it here, interval थोड़ा बदल देते हैं, ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम इसमें एक ऑर्थोनॉर्मल सेट में एग्जिबिट करना चाहते हैं, क्योंकि 0 2 पाई पे वो इजी हो जाएगा. उस पे भी हो सकता है. f is linear and this integral over 0 to pi, 0 to pi, ये ऐसे होगा, सॉरी यहाँ 2 pi है. ओके, ये इसका इनर प्रोडक्ट है. अगर मैं लेता हूँ enx को 1 by root 2 pi into e raised to power iota nx, where n can be any integer, ये जो सेट बनता है इन फंक्शंस का, then this is mutually orthogonal. वो हम चेक कर सकते हैं कि this is an orthonormal set. वो कैसे? मतलब अब चूंकि ये फंक्शंस कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, ये तो नाइस एनालिटिक फंक्शंस है, so they are Riemann integrable. So if a function is Riemann integrable, then it is also Lebesgue integrable. So they belong to this thing. Furthermore, this Lebesgue integral would be equal to the Riemann integral itself. So if a function is Riemann integrable, then it is Lebesgue integrable, and its Lebesgue integral is same as its Riemann integral. तो हमारे लिए easy है ये evaluate करना. If I want em, where n is not equal to m, so this would be integral 0 to 2 pi, क्योंकि अब मैंने कहा मैं ले सकता हूँ Lebesgue integral. So यहाँ क्या आएगा? It would be e raised to power iota nx into e raised to power iota mx bar dx.
तो वो बराबर होगा 0 to 2 पाई। अब तुम्हें पता है e रेज पावर आयोटा x का मतलब होता है cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, और अगर मैं इसका बार लेता हूँ वो ये है, तो वो बन जाता है cos of theta minus iota sin of theta, which is the same thing as e raised power minus iota x. So ये बन जाएगा e raised power iota nx e raised power minus iota mx dx, जिसको मैं आराम से इंटीग्रेट कर सकता हूँ 0 raised power 2 pi e raised power iota into n minus mx dx. Now that would be 0 to 2 pi. इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, ये रहेगा ऐसे का ऐसे ही, राइट। और डिवीजन में आएगा जो इसके डिफरेंशिएशन का ना जो फैक्टर आएगा, यानी इट वुड बी डिवाइडेड बाय i raised power n minus m, and you want to evaluate it from 0 to 2 pi, so that would be 1 by iota n minus m, right, into हमने यहाँ किया यूज बेस सर से इम्पोज, राइट, of course you have to find e raised power iota n minus m into 2 pi minus e raised power iota into n minus m 0. So anything raised power 0 is 1, so this is 1, और ये भी 1 ही होगा, क्यों? Now that means it is 0 if n is not equal to m, वो इसलिए क्योंकि डिनोमिनेटर में n minus m है, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा if n is not equal to m. अब ये क्यों होगा, तो इसका सिंपली क्योंकि ये बराबर होगा cos of n minus m 2 pi plus iota sine of n minus m 2 pi. Now where this is an integer, because n and m are integers, उनका difference भी integer ही होगा. Now any integer multiple of sine 2 pi, it would be just 0, or this would be 1. Any integer multiple of 2 pi, जो भी होगा cos of any integer multiple of 2 pi is 1. So this is indeed inner product, मतलब किसी दूसरे के साथ आपस में ये म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है, और इनका नॉर्म भी 1 है, क्योंकि अगर मैं लूंगा en, that's to norm of e, क्या आएगा, norm of en2 square, वो बराबर होगा 0 to 2 pi e raised power iota nx e raised power, ओ मैं भूल गया एक ही चीज, क्या भूल गया मैंने डिफाइन क्या किया था, 1 by root 2 pi मैं लगाना भूल गया, है ना, तो हालांकि यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसीलिए एक्चुअली यहाँ होना चाहिए 1 by root 2 pi, यहाँ पर भी 1 by root 2 pi, तो वो हमें मिलता बाहर 1 by 2 pi, 1 by 2 pi, उससे ऑब्वियसली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये 0 हो रहा है, तो इसलिए हमने नोटिस भी नहीं किया कि हम ये 1 by 2 pi मिस कर गए, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती, सो इट वुड बी डिवाइड बाय रूट 2 pi e raised power iota nx का बार divided by root 2 pi dx, so that would be of course 0 to 2 pi 1 by 2 pi बाहर, it should be e raised power iota nx e raised power minus iota nx, but that is just equal to 1, so it is 1 by 2 pi 0 to 2 pi dx, that's equal to 1. So you have, जो मैं कह रहा था, en या जैसे भी तुम लिखना चाहो, ei ej is equal to 0 if I is not equal to j, that's equal to what, 1 if I is equal to j. So in this way, ये जो हमारा function थी e raised power iota nx divided by root of 2 pi n running from n being any integer, this set is orthonormal in L202 pi. So we can think of orthonormal sets, but they could be functions, जैसा कि हमने यहाँ देखा, they could be vectors, sequences, जिस तरह की हमारी space है. So we have got orthonormal sets के बारे में ये हमने थोड़ा examples कुछ की. So next जो orthonormal sets हैं, इनकी कुछ properties हम करेंगे.
उनमें से पहले वाली ये है, तो लेट मी राइट इट हियर, थ्योरम। तो थ्योरम हम करेंगे लेट E1 E2 up to En be a finite force orthonormal orthonormal set in an inner product space of a Hilbert space in a Hilbert space H, then summation I runs from 1 to n modulus of x ei, ये जो डॉट प्रोडक्ट के मॉडुलस का स्क्वायर है, इनका सम, this is less than or equal to norm of x square for all x belonging to H, and x minus summation I runs from 1 to n x ei is perpendicular to ej for all j. तो इसको हम थोड़ा बाद में थोड़ा इसको इलैबोरेट करेंगे, लेकिन पहले हम जरा इसको प्रूव करते हैं. प्रूफ इज सिंपल, इट्स जस्ट अ कैलकुलेशन. Now clearly 0 is less than equal to norm of x minus summation x ei runs from 1 to n. किसी के अभी norm square जो होगा वो नॉन नेगेटिव होगा. But using the inner product, so it means it is, because this is an Hilbert space, norm square would be inner product with itself. So it would be I runs from 1 to n x ei comma x minus summation I runs from 1 to n x ei. अब क्योंकि ये और ये डिफरेंट है, तो जस्ट टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन मैं यहाँ इंडेक्स को लिखूंगा जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना. तो मैं बताया ना, इट इज द सेम थिंग, समेशन एक्स आई रन्स फ्रॉम 1 टू n is the same thing as summation xj runs from 1 to n. Can you hear me? तुम कोई सोए हुए हो सभी? हाँ सर ये ठीक है. सोए हुए मतलब ऐसे लिख सकते हैं. मैंने j लिखा क्योंकि मैंने इसको इस i के साथ कंफ्यूज करना चाहता. यहाँ अलग सम है, यहाँ अलग सम. ठीक है, ठीक है ना. तो हाँ सर. using the properties of the inner product, this can be written as xx. चलो मैं xx फिर आएगा माइनस summation I runs from 1 to n x ei as a vector comma dot inner product with x, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा यहाँ का x summation x ej ठीक है, j runs from 1 to n. Then I should have plus ऐसे summation I runs from 1 to n x ei comma summation x ej comma ej inner product close j runs from 1 to. मैंने इसको expand किया as per the properties of the inner product. So मैं यहाँ थोड़ा जाऊंगा, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पास बोर्ड में थोड़ी जगह कम है. So this should be equal to, पहला तो आना चाहिए norm of x square as you can see. फिर मुझे मिलना चाहिए माइनस, अब चूंकि सम जो है वो बाहर आएगा, because inner product में सम बाहर आ जाता है. I can write it as I runs from 1 to n x ei x. Then I should have minus, इसी तरह से ये वाला सम भी बाहर आएगा, summation j runs from 1 to n x ej and plus यहाँ दोनों सम बाहर आएंगे, summation I runs from 1 to n summation j runs from 1 to n x ei. यहाँ थोड़ा सा जगह ही नहीं मेरे पास, चलो थोड़ी सी जगह निकालते हैं कहीं से. So it would be plus, थोड़ा छोटा लिखते हैं,
ये लास्ट वाला जो इनर प्रोडक्ट है ये होगा समेशन I runs from 1 to n, summation j runs from 1 to n. Then I have inner product. अंदर दूसरा inner product है x ei comma x ej inner product close. ये होगा ये. Now ये स्केलर्स जब पहले वाले कंपोनेंट से बाहर आते हैं तो एज इट इज आते हैं, लेकिन जब दूसरे वाले कंपोनेंट से आते हैं तो वो विद कॉन्जुगेशन आता है. ये हमने किया है पहले वाले से सीधा दूसरे वाले वेरिएबल से जो स्केलर है, चूंकि ये स्केलर है और ये वेक्टर है. डॉट प्रोडक्ट इज इनर प्रोडक्ट इज अ स्केलर, सो दिस इज नंबर क्योंकि ये सेस्क्यूलिनियर होता है इनर प्रोडक्ट. So this would come out as it is, but the second one would come out as a क्या बोलते हैं as conjugate of itself. So यानी 0 is less than equal to, अब मैं लिखूंगा norm x square plus summation, नहीं माइनस था शायद, माइनस था ना, माइनस यस, यहाँ तो मिलना चाहिए मुझे x e I और मुझे लगता है it should be e I x, I runs from 1 to n. Let me check फिर से, हाँ बिल्कुल, फिर मुझे मिलना चाहिए x e j bar minus x e j bar into x e j runs from. Then I should have plus summation I runs from 1 to n, summation j runs from 1 to n. Let's see what I have. ये आएगा बाहर तो सीधा आएगा, ये आएगा with conjugate. So it should be, I think, x e I into x e j bar into, I think, e I e j. अंदर वेक्टर्स रहेंगे, स्केलर्स बाहर आएंगे, बिल्कुल सही. So let's now see what it is. Now this can be further written as, मैं इसको बहुत धीरे-धीरे कर रहा हूँ, minus summation I runs from 1 to n. मैं इसको लिखूंगा x e I bar, क्योंकि मैंने इसको फ्लिप किया. इसी तरह से मैं यहाँ लिखूंगा summation j runs from 1 to n x e j bar into x e j, इसको ऐसे ही रखते हैं. Good. So then I should have plus summation I runs from 1 to n. अब देखो मैं इस सम को रन करता हूँ, I को कुछ फिक्स रखता हूँ, J को रन करता हूँ, राइट? जब मैं ऐसा करूंगा तो I will get a sum. यहाँ पे नंबर्स हैं और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है. जब मैं इसको रन करूंगा E I E J आएगा सारे के सारे जीरोस, क्योंकि ये ऑर्थोनॉर्मल सेट है. E I E J जो है would be equal to 0 if J is not equal to I. So it would be 1 if j is equal to I. अब जब मैं j सम रन करूंगा, ये जो है ये सबको 0 बना देगा except when j is equal to I, तब ये 1 होगा. मेरे कहने का मतलब है this should be just x e I bar, कि जब I j के बराबर होगा तब 1 होगा, बाकी हर जगह 0. अब हमारा काम थोड़ा सा हो गया. So this is further equal to norm of x square. If you multiply a complex number by its conjugate, it would be mod square. It would be I runs from 1 to n, mod of x e I square. Then I have minus summation j runs from 1 to n, x e j square plus summation x e I bar I runs from 1 to n. As you can see, this and this would cancel out. So I would get, इसको जब मैं transpose करूँगा, summation mod of x e j runs from 1 to n square is less than equal to, right? Or which is the same thing as summation I runs from 1 to n x e I. Of course, this is true for any x belonging to h. अब इसका दूसरा हिस्सा जो है, I have to show that x minus I runs from 1 to n x e I is orthogonal to ej for all j. अब उसमें भी हम inner product ही देखेंगे obviously. So I take the inner product x minus summation I runs from 1 to n
x ei ei ej. Now this is actually x ej minus summation x ei ej. j runs from 1 to I runs from 1 to n. अब सम आएगा बाहर और स्केलर भी बाहर आएगा. So that would be summation I runs from 1 to n x ei into ei ej. Now I let I run from 1 to j. तो ये जो है ये डॉट पर ये सभी जीरो हो जाएंगे एक्सेप्ट व्हेन I is equal to j. यानी ये होगा सिंपली x ej minus x ej that's equal to 0. So यहाँ पे लिखेंगे since ei is an orthonormal set, या इस तरह से लिखो e1 e2 so on and up to en is an orthonormal set. तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इनर प्रोडक्ट 0 है तो इट मींस x minus summation I runs from 1 to n सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. अब आ रही है? हाँ सर आप आ गए. कैन यू हियर मी? ओके. तो ये था हमारा जो हमने ये छोटा सा रिजल्ट किया. तो इसमें एक चीज है जो ये ऑर्थोनॉर्मल, जब मैं किसी को ऐसे लिखता हूँ x ei तो मतलब ये इसको एक डिकम्पोजिशन है एक तरह से x का. It's a orthogonal decomposition of x. By that I mean जो हमारी usual basis है ना, जो कि orthonormal होती है. Let's me take this e1 to be the vector I, जैसे कि तुम्हें पता है this is nothing but 1 0. This corresponds to the point here. And अगर मैं e2 को लूं अपना j, जैसे कि तुम्हें पता है that is just 0 1, मतलब in this direction. And suppose I have a vector here. Let this be 3 4. This vector. Now this 3 4 can be written as a vector. This can be written as 3 into 1 0 plus 4 into 0 1. लिख सकते हैं ना? But 3 can be easily written as inner product of, let me call this A. So this is actually 3 times E1 plus 4 times E2. But this 3 is actually inner product of A with E1 plus 4 times 4 can be actually shown to be inner product of A with E2. That's very easy to show. यानी तुम चेक कर सकते हो एक्चुअली अगर मैं लूंगा इनर प्रोडक्ट ऑफ A with E1, वो होगा इनर प्रोडक्ट किसका, A क्या है, A is equal to 3 4 और E1 क्या है 1 0, तो वो हमें क्या मिलेगा, to be 3 into 1 plus 4 into that's equal to 3. यानी एक्चुअली ये है प्रोजेक्शन. इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ A. मतलब प्रोजेक्शन मीन अगर मैं यहाँ लाइट डालूं तो यहाँ क्या मिलेगा, ये जो ये नंबर है ये कहता है कि अगर मैं 3 की प्रोजेक्शन डालूंगा इन द डायरेक्शन ऑफ E1 तो वो लेंथ होगी 3 अगर ये 3 4 है. अगर मैं इसकी प्रोजेक्शन लूंगा मतलब इट्स द प्रोजेक्शन, मतलब एक्चुअली इनर प्रोडक्ट इज डिफाइंड, दैट इज द प्रॉपर डेफिनेशन. Inner product of a vector and another vector is actually the projection of that vector, projection of that vector in the normalized vector of the other one. Yani you can always define A dot B to be the projection of A along B by length of B, and a unit vector in the direction of B. So that is the definition. तो उसी को हम एक्सटेंड कर रहे हैं. हम कह रहे हैं कि you can write, मतलब then this becomes summation I runs from 1 to n
1 to 2 in this case, AEI, EI. मतलब जो हमने यहाँ पे लिखा था ना ये, this is actually the sum of the projections of this vector x along the vector EIs. और चूंकि उनकी लेंथ 1 है तो उनको नॉर्मलाइज करने की जरूरत नहीं. So this is the sum of the, हम कह रहे हैं कि ये जो sum of projections है along this set of mutually orthonormal vectors, जो कि मैंने यहाँ E1 E2 लिए, it will not exceed the length. तो यहाँ पर तो एक्चुअली ये बराबर आ रहा है a के, है ना, a की लेंथ एग्जैक्टली बराबर होगी whatever this sum of the squares, और that's it. मतलब मैं इसको और एक्सपेंड करता, लेकिन यहाँ मौलवी साहब मस्जिद में थोड़ा ऊंचा ऊंचा बोल रहे हैं लाउड स्पीकर पे, तो तुम नहीं, मतलब मैं थोड़ा इसको बंद ही करना चाहता हूँ. नहीं वैसे अच्छा है, नमाज पढ़ रहे हैं तो मेरा ऐसा नहीं कहना, लेकिन मुझे इससे शक हुआ. आज फ्राइडे तो नहीं है, वैसे फ्राइडे नहीं है आज. सर आज है. आज है, देखो क्या जमाना आ गया, आज फ्राइडे है, मुझे पता भी नहीं. ओके एनीवेज, देखो अफसोस की बात है, मुझे फ्राइडे का नहीं पता. तभी ये एनीवेज, तो मुझे लगता है अब हम ये बंद करते हैं, कल इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे. आज क्या फ्राइडे है, तो थैंक यू, मुझे याद आ गया जी सर. याद दिलाने के लिए. खुदा हाफिज. खुदा हाफिज.